Hi everyone. Oh, hi Kushlendra. Hello. Hi everyone. Welcome back with another Study Jam session 2. Just a wait. Okay. My name is Marjit and I am a DSC community lead at PGDAV College. Today we are going to discuss about Android Study Jam session 2 कि क्या-क्या हम cover up करने वाले हैं. Are you all excited about this session? Write on the live chat ki how much are you excited, or you can say hi, hello, or share your favorite emoji in the live chat. And I'm also seeing the live section. So make sure to make this interactive while while posting your queries or emojis in the live chat section. So before starting the Android Study Jam session 2, let me tell you about DSC. So basically, DSC is a student-oriented club which comprises of developers, innovators, designers, marketers, and many more. We are conducting events on a regular basis. So to know more about our events or upcoming events, you can check out our social media handles. Very active on social media, or you can go to our website. Okay. So let's recap from the session one what we have covered. So in session one we have covered ki what is Android Study Jam and how you can start your Android Study Jam and what are the tasks you have to complete. So if you haven't watched our first Android Study Jam, then go to the link which I will share in the comment. Just give me a moment. Let's see who are there in the chat. Hi Anvisha. Hi Kushendra. Hello. So this is the YouTube link for our first session. So you can watch the first session of Android Study Jam if you don't know about what is Android Study Jam. So that's it. Now moving further कि आज हम क्या क्या करने वाले हैं. Okay. I think there are only very few members in the live chat. Okay, don't worry. Let's go move to our slides. Yep. So this is our Android Jam. So Android Study Jam, what we are learning today. So in learning objectives are first we will learn a basic of Kotlin programming language. So if you don't know about any programming language or Kotlin before, then don't worry. I will try to give you knowledge about the basic program of Kotlins. Okay. So first part we will cover the basics of Kotlin. Then we will create our first project from scratch. Then we will understand ki, what are and why we use Android Studio and what are the features in Android Studio. Then we will create our first birthday card app. So this is the main thing which we are creating today. Okay, so this is our learning objective for today. Yeah. So here's the today's agenda. Right now we will start from basic to Kotlin language. Then we will create our first app using our Android Studio. Then we will create our basic layout. So if you haven't installed the Android Study Jam yet, then don't worry. All the links for the installations are in the description. So watch this video till the end. Then if you agar to install liya in the studio, then install it. Then you can see this session again. Okay. So don't worry for that. तो ये आज का एजेंडा हमारा. देन वी विल कवर आज मतलब बेसिकली क्या करने वाले हैं हम. वी आर trying to cover up the Kotlin basic for Android track. So in the first unit there are three tracks. In the first track there are three units. So this is the first unit which is Kotlin basic for Android. So in this unit there are four sub pathways. So today we will try to cover the first three pathways. Okay. And the fourth pathway will be covered tomorrow.
So कल भी हमारा सेशन है, तो we will create a dice roller app. Okay, and make sure to ask your questions or any kind of doubt in the live chat. I will happy to help. I will happy to answer all your queries. Okay. Let me check our chat section. Hello Shubham, hi. Am I audible now? Can anyone give a thumbs up key whether I'm audible or not? Are you able to hear my voice properly or not? Just give a thumbs up or hi, hello, so that I can understand कि हाँ, you are listening my voice. Let's just wait for some few seconds. Yep. So don't worry, guys, if you haven't create any app today, you can easily create your first Android app. Okay, so don't worry for this. Now moving further, first we will learn कि हाँ Kotlin basics में क्या क्या चीजें चाहिए. तो अभी हम उस पे cover up करेंगे topics. So in Kotlin basic today we are covering this following topics. So first one is variables. We will cover variables in the Kotlin language. Then we will cover the data types कि कितने types of data types होते हैं. Then conditions, collections and loops. We will cover the classes and the function part by tomorrow or in the upcoming session. Okay. नाउ द फर्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग कि तुम जो अपना कोटलिन प्रोग्रामिंग है वो तुम कहाँ करोगे. Either you can install the IDE where you can write your code and run it simultaneously, but if you haven't install or download any IDE or code editor, then don't worry guys, you can use Kotlin Playground, which is a browser based code editor where you can write your code and get the output. So this is the Kotlin playground structure, how this look like. So अभी हम Kotlin program मतलब Kotlin playground में हम सारा code लिखेंगे. So let's get started. Okay, let me minimize the screen. So first तुम्हें क्या करना होगा, just you have to type Kotlin playground. Yeah, and just click the first link. So this is the first page which जो कि तुम्हें दिखेगा. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जो कोटलिन में जो प्रोग्रामिंग होती है वो स्टार्ट होती है किससे, फन मेन फंक्शन से. जितना कोड होता है वो फन मेन के अंदर है. एज यू नो कि जब भी हम कोई भी प्रोग्रामिंग स्टार्ट करते हैं तो हम सबसे पहले जो प्रोग्रामिंग लिखते हैं वो होते हैं हम हेलो वर्ल्ड वाला प्रिंट करते हैं. सो लेट्स रन इट. सो यहाँ पर रन वाला ऑप्शन है, तुम यहाँ पे रन क्लिक कर सकते हो. बिफोर दैट अगर तुम्हें टेक्स्ट की साइज बहुत स्मॉल दिख रही है, तुम्हें विजिबल नहीं है, देन प्लीज राइट इट इन द चैट सेक्शन. आई विल एनलार्ज दिस टेक्स्ट. Okay, let me enlarge it little bit. Yeah. So यहाँ पे run वाला एक button है. You can click the run button. Let just wait a moment. Yeah. So यहाँ पे run वाला option है, तो तुम यहाँ पे run click कर सकते हो. Yeah. So this is the first program hello world वाला कि कैसे लिखा हमने fun main, then अंदर print statement डाल दिया और hello world. So this is the easiest program which everyone can easily write or run. Okay. So ये था हमारा basic program hello world वाला. Okay. Let's see the chat section कि कुछ doubts तो नहीं है. Hi Anjali, Adya, Kaushal in the show. Or if you have any doubt, you can post in the comment section. Our core member will happy to help you. Okay, so don't worry about this. Yeah, सब अभी हम कहाँ पे थे? We are trying to cover the basics. So पहला है हमारा कि variables हमारा टॉपिक था. So there are two types of variables. First one is the multiple variable. Second one is the read-only variables. Let me start with multiple variables. Let me code it on the Android playground, Kotlin playground. Yeah. So here I have written where number equals to 70, println number, dollar sign number equals to 42. So यहाँ जो where है वो mutable है. So mutable variable क्या होता है? You can reassign the variable as many time as you can.
फॉर यहाँ पे हमने वेर नंबर एक बार असाइन किया 17, उसके बाद फिर हमने नेक्स्ट टाइम फिर से नंबर को असाइन किया 42। सो हमने नंबर को बार-बार असाइन किया विद डिफरेंट नंबर्स। सो दैट्स तो ये जो वेर है वो किस पे आता है? म्यूटेबल वेरिएबल्स। लेट्स रन इट। 1 मिनट, लेट मी मिनिमाइज़। मेक श्योर टू पैरेंथेसिस लगाना है, मतलब क्लोजिंग पैरेंथेसिस और ओपन पैरेंथेसिस। सो या नंबर 17, नंबर 42। सो दिस इज़ म्यूटेबल वेरिएबल्स। बेसिक म्यूटेबल्स वेरिएबल क्या होते हैं? Mutable, एक minute. Yeah. So mutable means that the variable can be reassigned to different values after initial. Then we have our read-only variables. Let me write this code on the Android playground. Yeah. So this is जो readable variable है उसको हम किससे denote करते हैं? val से, and mutable variable var से. So this is the major difference between both the variables. Okay. Let's run this code. वेट फॉर अ मिनट। हाँ, ये यहाँ पे एरर क्यों शो हो रहा है? क्योंकि हमने नंबर को दूसरी बार असाइन किया 42, जो कि हमें नहीं करना था, क्योंकि ये यहाँ पे क्या यूज़ कर रहे हैं? रीड ओनली वेरिएबल। सो लेट मी रिमूव दिस लाइन एंड रीरन अगेन। So it will run number equals to 17. So this is read only variable. Okay. So read only variable can be declared using val, and it means that the variable cannot be reassigned once initialized. Okay. So this is the part is covered कि क्या होते हैं variables, कितने types के होते हैं. Now we will moving toward the basic data types. So जैसे कि बताया कि हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं, सेम Kotlin प्रोग्रामिंग में डिफरेंट डिफरेंट डेटा टाइप्स होते हैं. Now there are four basic data types to store integers, number, different size in the Kotlin. Let me run the data type part. Wait. Yeah, just give me a yeah. So यहाँ पे मैंने कैसे असाइन किया वेरिएबल बाइट के वैर वेरिएबल नेम फिर कॉलन फिर डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल की बाइट है इक्वल्स टू 27। एक बार मैं इसको प्रिंट करता हूँ। प्रिंट या सो ये प्रिंट हो गया बाइट 127। ऐसे ही बाकी भी हम प्रिंट कर सकते हैं। मान लो यहाँ पे बाइट का साइज इंक्रीज कर 127 128 कर देता हूँ। जस्ट अ मिनट। नाउ ये एरर शो करेगा क्योंकि बिट का जो साइज है वो 127 तक ही। बाकी जितने भी शॉर्ट वाले ये सारे लार्जेस्ट साइज हैं, तो इससे ज़्यादा साइज हम इंक्रीज कर सकते हैं। ओके, सो ये बेसिक डेटा बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग, तो इसको हम इसी हिसाब से डिक्लेयर करते हैं। नाउ मूविंग टूवर्ड द अदर डेटा टाइप जो होते हैं हमारे पास फ्लोट एंड डबल। ओके, हाँ शुभम, वी आर स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स एंड आई विल ट्राई टू कवर द बेसिक till 5:10 or 5:15. After that we will cover the Android Studio part ki how to install, how to run an app on the Android Studio और Android Studio होता क्या है और कैसे तुम रन कर सकते हो. Just I will explain the basic, then we will cover up the Android Studio part. Okay. So let me move forward to our Kotlin basics. Yeah, just give me a second. Yeah. So similarly float के लिए भी तुम क्या यूज कर सकते हो? फ्लोट के लिए भी तुम वैल फ्लोट, डेटा टाइप ऑफ फ्लोट और जो भी नंबर, और मेक श्योर कि जब तुम फ्लोट डिक्लेयर करो तो लास्ट में तुम एफ यूज कर लो। एफ तो एफ डिनोट की है ये फ्लोट वेरिएबल, फ्लोट डेटा टाइप। ओके, सिमिलरली डबल के लिए अलग है, तो तुम ऐसे डबल डिक्लेयर कर सकते हो। लेट्स रन दिस इन दिस। आई प्रिंट फ्लोट। So this shows the float value. Now moving to the string part. कि तुम how you can print the char or string data values. So
just here's the character or string part. To print a char or single character, you use char data type, or to print a string of character, then you use string data type. So let's print text, yeah, and run this. So here's the output of the answer output. Okay, learning about Kotlin data types. So this is covered basic data type जो की होते हैं हमारे पास. Now moving to the, हाँ, और एक लास्ट डेटा टाइप होता है, वो होता है boolean. Boolean is used to store either true or false. Let's code this, yeah, and print yes. यहाँ yes और no जो है वो variables है, okay, variable name, और जो boolean है वो data type है. It shows the true value. Now other top in data types there is a one concept की type inference. So type inference क्या होता है? It is a compiler feature that allow you to omit the type in your code. In simple language मैं ये बता सकता हूँ कि तुम्हें data type लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है? Let's code the let's code in the background. फिर शो करता हूँ आपको. यहाँ पे मैंने स्ट्रिंग यहाँ पे क्या है, एक वेरिएबल नेम है. यहाँ पे मैंने डेटा डिक्लेयर नहीं किया, क्योंकि कॉटलिन प्रोग्रामिंग ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया कि हाँ, ये जो एजुकेटिव है इसका डेटा टाइप क्या है. यहाँ पे स्ट्रिंग, इंट, लॉन्ग ये वेरिएबल नेम्स हैं. लेट मी प्रिंट दिस float and run. Yeah. So this is the value of the float 1.23. सो ये था कि टाइप इन्फ्लुएंस क्या होता है, वेयर कॉटन प्रोग्राम कैन इजीली डिटेक्ट कौन सा डेटा टाइप है वो. ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू कंडीशंस पार्ट. सो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था इन कॉटलिन 6 वो था कंडीशंस. पहले हम जान लेते हैं कॉटलिन क्यों यूज कंडीशंस क्यों यूज करते हैं. बेसिकली कंडीशंस अलाउ यू टू कंट्रोल व्हाट द प्रोग्राम डज एंड परफॉर्म डिफरेंट एक्शंस बेस्ड ऑन दिस, लाइक इफ और कोई भी लॉजिक स्टेटमेंट है उसको हम कंडीशन के अंदर यूज करते हैं. तो बेसिकली देयर आर टू कंडीशन. फर्स्ट वन इज द if else and second one is the when keywords. As you have already aware about the if else statement, क्योंकि हम बात प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पढ़ रखे हैं कि क्या सी प्लस हो गया, जावा हो गया, पाइथन हो गया. when कीवर्ड एक नया स्टेटमेंट, एक नया कंडीशन है which we will cover in this session. So पहले एक बार हम if else वाला देख लेते हैं. तो यहाँ पे एक बार मैं कोड एंटर करता हूँ. सो यहाँ पे प्लैनेट वेरिएबल जिसको मैंने जुपिटर में डिक्लेयर कर दिया हूँ, वेरिएबल का नाम. इफ कंडीशन है कि अगर प्लैनेट इक्वल्स जुपिटर है, देन प्रिंट दिस, अदरवाइज प्रिंट द अदर, प्रिंट नेक्स्ट लाइन एल्स इफ, या नेक्स्ट लाइन नो डेटा फॉर द प्लैनेट. और ये जो है डॉलर और प्लैनेट, ये क्या होता है, वेरिएबल जो भी तुमने असाइन किया है वेरिएबल्स को, जो भी वैल्यू वो यहाँ पे अपना आप डिटेक्ट कर लेता है, इसलिए हम यूज करते हैं डॉलर साइन. ओके, लेट्स रन दिस कोड बेसिक. ओके, या वी फॉरगेट टू इंक्लूड वन मोर पैरेंथेसिस. सो ये सारे जो एरर्स होते हैं वो तुम्हें देखना होगा कि हाँ क्या क्या एरर्स आ रहे हैं. सो दिस इज द आउटपुट कि अगर प्लैनेट की वैल्यू जुपिटर है, देन प्रिंट रेडियस ऑफ अ जुपिटर इक्वल्स टू 69 किलोमीटर, 69,911 kilometers. So this is the if else statement part. Now most important part ki when. So you can use when condition to define different behavior for a given set of distant values. It is quite similar to the switch जो कि तुम यूज करते हो सी और जावा और सी प्लस प्लस लैंग्वेज में, बट स्विच के बहुत सारे अलग फीचर्स हैं विच वी विल सी इन दिस पार्ट. ओके, लेट्स रन दिस कोड फर्स्ट, ताकि तुम्हें थोड़ा अवेयर हो जाए कि हाँ व्हेन होता क्या है. ओके, क्या पहले हम प्लैनेट, वेल पहले हम प्लैनेट को डिक्लेयर कर देते हैं. पहले NET equals to, just a minute, Jupiter.
then run this code. Yeah. So यहाँ पे radius of Jupiter is 69,000. तो यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे अगर जुपिटर तो आंसर है तो क्या प्रिंट करेगा, रेडियस ऑफ जुपिटर इज दिस। इफ प्लैनेट को हमने असाइन किया सैटर्न से, देन इट विल प्रिंट द नेक्स्ट लाइन। अगर हमने कुछ भी असाइन नहीं किया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जुप करके लिख लेते हैं हम, देन नो डेटा फॉर द प्लैनेट जुप। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट व्हेन। तो व्हेन में क्या होता है कि हाँ, रिजल्ट उसको फिर हम एरो से डिनोट करते हैं जो भी हमें प्रिंट करना है। तो इस तरह से हम व्हेन वाला जो फीचर है वो यूज़ करते हैं। ओके, सो ये था व्हेन वाला। Then moving forward to the expression and the statement. There is a major difference between expressions and the statement. So in Kotlin, both if and when can be used as an expressions instead of statements. Okay, तो पहले हम जान लेते हैं कि expressions होता क्या है और statements क्या होते हैं. So basically an expression is a piece of code that has a value. Okay, कोई भी कोड है उसके वैल्यू है तो उसको हम एक्सप्रेशन कहेंगे। लाइक 42 into 17 एक वैल्यू है तो ये एक्सप्रेशन है। कॉटलिन एक स्ट्रिंग है, ये एक्सप्रेशन है। ओके, सो और जो स्टेटमेंट होता है, स्टेटमेंट क्या होता है, इज अ पीस ऑफ कोड विथ नो वैल्यू। सच एज कोई भी हमने फंक्शन नाम दे दिया, राम, फन राम, पैरेंथेसिस और पैरेंथेसिस और उसको ब्रैकेट में हमने डाल दिया, तो उसके अंदर कोई कोड नहीं है, तो वो क्या कहलाता है, स्टेटमेंट। लेट मी शो दिस, एक मिनट वेट। तो या दिस इज अ स्टेटमेंट। ओके, और कोई भी वैल्यू है कि हाँ 42 into 7, दिस इज एक्सप्रेशन। ओके, यहाँ पे हम किस पर्टिकुलर वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे थे कि जो इफ और व्हेन होता है वो एक्सप्रेशन नहीं होता, वो स्टेटमेंट्स होते हैं, मतलब एक्सप्रेशंस होते हैं, स्टेटमेंट्स नहीं होते। लेट्स कोड करते हैं एक बार इफ वाला पार्ट कि हाँ वो एक्सप्रेशन क्यों है। जस्ट run this। पहले हम एक बार डिक्लेयर कर देते हैं planet वेरिएबल, well really planet equals to Jupiter। well radius, okay, print 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 radius in kilometer। सो यहाँ पे हमने क्या किया है, जो इफ वाला है उसको हमने असाइन कर दिया रेडियस इन किलोमीटर वेरिएबल पे। सो इसका जो भी आउटपुट होगा इफ का, वो कहाँ स्टोर होगा, रेडियस पे, रेडियस इन किलोमीटर पे। तो दिस इज द आउटपुट। ओके, सो दैट्स व्हाई वी कॉल if statement as expression। Okay, now we will check for the when क्यों हम when को हम क्यों expression कहते हैं। Okay, so let's code it। Yeah, remove this part and it print radius in kilometer। Okay, so यहाँ पे जो when वाला जो आउटपुट है वो कहाँ स्टोर हो रहा है, रेडियस इन किलोमीटर पे। ओके, so that's why it's called statements, एक्सप्रेशंस नॉट स्टेटमेंट। ओके, सो एक थोड़ा कंफ्यूजन टॉपिक है कि क्या एक्सप्रेशन है क्या स्टेटमेंट है। सो इफ और व्हेन आर यूज्ड एज एक्सप्रेशंस, क्योंकि कोई वैल्यू हमें मिलती है लास्ट में। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सप्रेशन एंड स्टेटमेंट फॉर इफ और व्हेन। Now moving forward to the collections. So collections are used to store, retrieve, delete, manipulate data. Okay, so there are basically four types of expressions. So first one is the list, sets, arrays, and map. Okay, so here are the four types. Let me do it. Yeah, so here are the four types of expression.
बट बिफोर दैट लेट मी टेल यू कि हाँ जो कमेंट्स होता है वो कॉटलिन में कैसे यूज करते हैं. सो फॉर सिंगल लाइन कमेंट वी कैन यूज डबल स्लैश. सो दिस इज अ सिंगल लाइन कमेंट. फॉर मल्टी लाइन कमेंट यू कैन यूज स्लैश स्टार यहाँ पे फिर स्टार स्लैश वेट. So this is a multi-line comment और this is single line comment. So comments are used for documentation कि लोगों को पता चले कि हाँ तुमने जो कोड लिखा है उस कोड के पीछे क्या है, ताकि हर कोई बंदा उस कोड को समझ सके. Okay, that's why we use comments. So this is basically the comments. Now we were talking about the collections. So first collection is list. Let's check the uh, comments part. Okay. So hi Shahil is there. Okay, zoom कर दो. Okay. I think now it's visible to everyone. एक बार मैं और zoom कर देता हूँ. Wait. I think now it's visible ना. Yeah, perfect. Increase text size. Okay. So I have already increased the text size, so you can check this out. Now we are talking about the list. Okay. So what are the list? So एक बार मैं कोड करता हूँ लिस्ट ताकि तुम्हें थोड़ा आइडिया हो जाएगा. Yeah. This- yeah. Print SI units. Run. SPRINT. एक मिनट. Control X. Expected top level declaration. Okay, let's remove this. Okay, हमने parenthesis दो बार यूज कर लिया था. Okay, got it. Yeah. So यहाँ पे हम लिस्ट कैसे डिक्लेयर करते हैं. वी आर यूजिंग वेल देन वेरिएबल नेम एसआई यूनिट्स देन लिस्ट ऑफ. लिस्ट ऑफ क्या है, एक फंक्शन है जो कि लिस्ट डिक्लेयर करता है पूरा. तो यहाँ पे हमने करेक्टर यूज किया एस एम के जी ए के मॉल सी डी. तो ये हमने लिस्ट डिक्लेयर किया है. तो ये से हम डिक्लेयर कर सकते हैं और प्रिंट कर सकते हैं. और यू कैन ऑल्सो क्रिएट रीड ओनली लिस्ट और म्यूटेबल लिस्ट. देयर इज अ मेजर डिफरेंस बिटवीन द रीड ओनली लिस्ट और म्यूटेबल लिस्ट. एक बार मैं कोड करता हूँ. ठीक है. तो मेन डिफरेंस जो होता है लिस्ट ऑफ में, एक तो होता है रीड ओनली लिस्ट और म्यूटेबल लिस्ट. सो जो म्यूटेबल लिस्ट होता है वो क्या होता है, क्रिएट म्यूटेबल लिस्ट. मतलब अलग अलग वेरिएबल अलग अलग वैल्यू से वो लिस्ट क्रिएट कर सकता है. बट यू माइट बी कंफ्यूज कि मैं मतलब व्हाट दिस मीन कि म्यूटेबल लिस्ट क्या है और रीड ओनली लिस्ट क्या है. So in read only list you cannot add or remove elements from the list after it created. ठीक है. जैसे क्रिएट हो जाता है लिस्ट तब उसके बाद तुम ऐड और रिमूव नहीं कर सकते. तो एक बार मैं जो अभी मैंने जो कोड लिखा था वो था रीड ओनली लिस्ट. अब मैं बाद में उसको अपडेट नहीं कर सकता. ठीक है. अदर वन क्या था, म्यूटेबल लिस्ट. म्यूटेबल लिस्ट में क्या है, यू कैन अपडेट योर लिस्ट. ठीक है. फॉर म्यूटेबल लिस्ट यू कैन डायरेक्टली यूज म्यूटेबल लिस्ट ऑफ. तो यहाँ पे एक बार मैं चेंज करता हूँ यहाँ पे. या MUTABLE म्यूटेबल लिस्ट. म्यूटेबल लिस्ट ऑफ. या सो अगर तुम्हें चेंज करना है अपने लिस्ट को देन यू कैन डायरेक्टली यूज द म्यूटेबल लिस्ट ऑफ फंक्शन. ठीक है. तो ये था लिस्ट ऑफ, म्यूटेबल लिस्ट ऑफ, मतलब म्यूटेबल लिस्ट और रीड ओनली लिस्ट में मेजर डिफरेंस. ओके. नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू आवर सेकंड कलेक्शन व्हिच इज सेट. सो सेट में क्या होता है, इन सेट it is a linear data structure that contains multiple lines. However, sets are different from the list because sets में क्या होता है, कोई ordering नहीं होती. देयर इज नो सच कि हाँ तुम्हें थर्ड एलिमेंट फाइंड आउट करना है सेकंड या कोई इंडेक्स से वो डिनोट नहीं होता. ठीक है. सेकंड है कि कोई भी डुप्लीकेट वैल्यूज तुम यूज नहीं कर सकते. मानो तुमने 42 दो बार डिक्लेयर कर दिया बट जो प्रिंट होगा वो सिंगल ही 42 प्रिंट होगा. तो एक बार मैं कोड करता हूँ इस पे. वेट. या ये भी बेसिक्स ही है, तो कुछ भी अगर तुम्हें डाउट्स हो तो तुम
चैट सेक्शन में पूछ सकते हो। उसके बाद मैं कोई भी क्वेरी होगी तो उसी समय रिजॉल्व कर दूंगा मैं। MEMBERS मेंबर्स, या अब अगर इन केस यहाँ पे मैं एक बार फिर से जेनी डालता हूँ, देन जो आउटपुट आ रहा है उस पे देखो कि उसने तीन ही वैल्यूज को डिटेक्ट किया है। तो दिस शोज की जो लिस्ट होता है और सेट होता है वो डुप्लीकेट वैल्यूज को शो नहीं करता। ओके, और तुम कैसे डिक्लेयर कर सकते हो लिस्ट के लिए? यू कैन यूज म्यूटेबल सेट ऑफ, जैसे पहले वाला यूज किया था फॉर द लिस्ट म्यूटेबल लिस्ट ऑफ या लिस्ट ऑफ, ऐसे ही तुम सेट के लिए म्यूटेबल सेट ऑफ यूज कर सकते हो। तो ये तो था क्रिएट रीड ओनली लिस्ट, ठीक है। अगर तुम्हें राइट मतलब म्यूटेबल लिस्ट करना है तो वहाँ पे तो म्यूटेबल के लिए यूज कर सकते हैं। आई थिंक ये नॉट अ रीड ओनली लिस्ट, ये म्यूटेबल लिस्ट है। तो आई थिंक कंफ्यूज, ये रॉन्ग गलत लिख दिया होगा मैंने, ठीक है। तो वो एक बार देख लेना। सो दैट दिस इज अबाउट सेट की सेट्स क्या होते हैं। एक बार हम सेट्स पे बाकी फीचर्स भी देखते हैं क्या क्या और कर सकते हैं हम सेट के अंदर। अभी 5:3 हो रहा है, वी विल ट्राई टू कवर अप द बेसिक्स within 5 to 4 minutes more. Okay, then we will start the Android Studio. So don't worry. Yeah, just print this print numbers. Yeah. सो यहाँ पे हम देखते हैं कि पहले हमने जो हमारा मेंबर्स था उस पर कौन से 3 मेंबर्स थे, सुशीन, जैक एंड जेनी। देन हमने मेंबर्स पे एक और सेट ऐड किया, ग्रेग। तो ग्रेग ऐड हो गया, फिर हमने रिमूव किया जैक, जैक रिमूव। फिर हमने मेंबर डॉट क्लियर फंक्शन यूज़ किया, जिससे क्या हुआ, जितने भी मतलब उस पे थे इनपुट्स वो सारे डिलीट हो गए। सुशीन, जैक, जेनी, जज और बाकी सारे रिमूव हो गए। फिर हमने ऐड ऑल किया। ऐड ऑल फंक्शन क्या होता है, जहाँ पे हम सेट को अपडेट कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या अपडेट किया, एडम और ईव को ऐड कर दिया। और देन हमने प्रिंट किया मेंबर, देन इट शोज एडम और एव ओनली, ठीक है। तो ये था बेसिक्स ऑफ सेट की, कैसे रिमूव कर सकते हो, कैसे ऐड कर सकते हो। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द एरे पार्ट। आई थिंक एरे तो सबको पता ही होगा कि यू आर यूजिंग इन सी प्लस प्लस, जावा। सो इट्स बेसिकली इट स्टोर दियर वैल्यूज इन कंसेक्यूटिव पार्ट ऑफ अ कंप्यूटर मेमोरी। एंड और ये लिस्ट और स्टेटमेंट से थोड़ा बहुत डिफरेंस करता ही है। तो वो था। एक बार मैं एरेज वाला भी कोड लिख ही देता हूँ, मतलब पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे, तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा। या रन इट। या सो यहाँ पे तुम कैसे डिक्लेयर कर सकते हो एरे के लिए, वेरिएबल नेम, फिर एरे ऑफ, जो कि बताया था फंक्शन है जहाँ पे तुम इनपुट यूज कर सकते हो जो भी तुम्हें प्रिंट करना है। फिर यहाँ पे वैल्यूज हाई, मीडियम, लो। देन अगर तुम्हें पहला वैल्यू प्रिंट करना है कि मीडियम, और हाँ, एरेज किससे स्टार्ट होता है, इंडेक्स 0 से। तो ये जो हाई है उसका इंडेक्स क्या है, 0, मीडियम 1, लो 2। सो प्रिंट प्रायोरिटी 1, इंडेक्स 1 क्या प्रिंट करेगा, मीडियम। ऐसे ही सिमिलरली अगर हमने मीडियम को चेंज कर दिया नॉर्मल में, तो प्रिंट 1 फिर से 1 करेंगे तो क्या प्रिंट करेगा, नॉर्मल। तो यहाँ पे हम एरे को चेंज भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, रिमूव भी कर सकते हैं। और ये साइज क्या है, प्रिंट प्रायोरिटी डॉट साइज, जो कि डिनोट करेगी कितने एलिमेंट्स है उसके अंदर। तो दे आर 3 एलिमेंट्स। सो दिस इज द बेसिक एरे की किस हिसाब से हम एरे डिनोट और डिक्लेयर कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। ओके, लेट मी चेक द चैट पार्ट। Can we use string and number also in list? Yeah, you can, Shubham, use list and number. So bracket कल डाला है, okay. Yes, now it's visible, thanks. Okay, cool. So कोई भी डाउट हो, कुछ भी हो तो यहाँ पे चैट में देख लेना, क्योंकि मैं बीच बीच में चैट चेक कर रहा हूँ, और दे आर आवर कोर मेंबर्स which can help you to resolve your query. Okay, so don't worry about it. Ask questions as much as you can. Okay. So now moving forward to our maps part. So this is the final collections in the Kotlin. So map क्या होता है? This is a concept you may also use in as a dictionaries. So dictionaries क्या था, जो हमने पाइथन में यूज किया था, कि वहाँ पे एक कीवर्ड होता है, कीवर्ड से फिर उसका वैल्यू होता है, ठीक है। लेट मी कोड दिस आवर प्लेग्राउंड।
and the print grades. सो ये था, हमने वैल डिक्लेयर किया, फिर मैप ऑफ कर दिया फॉर डिक्लेयरिंग आवर मैप। यहाँ पे कैट जो कीवर्ड है उसका वैल्यू क्या दे दिया हमने, टू 3.9, जैक टू 3.4, सुशेन टू 3.5। सो दीज आर द डिनोशन कि जैसे हमने डिनोट किया, एंड यू कैन प्रिंट द ग्रेड्स। सो ऐसा वो प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, इट्स क्वाइट सिमिलर टू डिक्शनरीज विच यू हैव यूज्ड इन पाइथन। ओके, नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द लूप्स। सो लूप्स के बारे में तो सबको आइडिया ही होगा कि कितने टाइप्स ऑफ लूप्स होते हैं, वाइल, डू वाइल एंड फॉर लूप्स। सिमिलरली Kotlin offers these standard types of loops. ओके, सो एक बार फॉर लूप देख लेते हैं फटाफट, उसके बाद फिर वाइल वाइल लूप करने के बाद फिर मूव ऑन टू आवर एंड्रॉइड स्टूडियो पार्ट। ओके, जस्ट वेट, या स्क्रीन, या सो here you can see कि कैसे हम फॉर लूप यूज करते हैं। फॉर, फिर नंबर जो भी हमारा वेरिएबल टाइप है, नंबर इन रेंज की 1 से लेके 5 तक हमें प्रिंट करना है, फिर प्रिंट एलन नंबर। तो यहाँ पे देख लो कि 1 और 5 दोनों इंक्लूड है, तो ये यहाँ पे प्रिंट कर दिया 1 2 3 4 5। ऐसे ही फॉर नंबर इन 1 अंटिल 5, तो 5 तक प्रिंट करेगा, मतलब 5 प्रिंट नहीं करेगा, 5 से पहले तक प्रिंट कर देगा, तो 1 to 4, दैट्स व्हाई वी यूज अंटिल। ऐसे ही नम इन 1 से 5 और स्टेप 2, मतलब 2 को स्किप कर देगा, बाकी सारा प्रिंट कर देगा, तो इट विल प्रिंट 1 3 5। सो ये आउटपुट है, एक बार चेक कर लेना। ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूज किया है, डाउन टू करके। बाकी यहाँ पे कैर का भी यूज किया है हमने कि ए से सी प्रिंट करेगा, ए बी सी। सिमिलरली प्लैनेट के लिए, प्लैनेट इन प्लैनेट्स, तो यहाँ पे प्रिंट कर रहा है जुपिटर और सैटर्न, जुपिटर और सैटर्न स्ट्रिंग टाइप। और कैर के लिए प्रिंट कर रहा है VENUS फॉर द कैरेक्टर टाइप्स। ओके, सो दिस इज हाउ इट विल प्रिंट, या सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर लूप। सो इस तरह से हम डिक्लेयर कर सकते हैं और यूज कर सकते हैं। नाउ वी विल जंप टू आवर वाइल लूप पार्ट, या सो यहाँ पे अभी आपने फॉर लूप देखा कि रेंजेस आर कॉमनली यूज फॉर बेसिक लूप, तो हमने रेंज के लिए क्या यूज करता है, डबल डॉट। 1 से 5 तक हमें प्रिंट करना है, तो 1 डबल डॉट 5। सो ये था। नाउ लेट्स चेक आवर व्हाइल लूप। Just give me a second. Yeah, run. हाँ, यहाँ पे पहले वही फंक्शन हमने डिक्लेयर किया, फिर एक वेरिएबल आई डिक्लेयर किया जिसका वैल्यू 1 है, फिर हमें प्रिंट कराना है कब तक, 5 तक प्रिंट कराना है कि आई इज लेस देन इक्वल्स टू 5। ये लॉजिकल है कि हाँ कहाँ तक प्रिंट कराना है। देन प्रिंट एलन, एलन क्यों यूज करते हैं हम, फॉर प्रिंटिंग द नेक्स्ट लाइन। अगर हम एलन यूज ना करें तो डायरेक्टली वो एक ही लाइन में सारा प्रिंट कर देगा कि लाइन 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 एक ही लाइन में। ठीक है, दैट्स व्हाई वी यूजिंग एलन। देन इंक्रीमेंट प्लस प्लस आई की, हाँ जैसे ही लाइन 1 प्रिंट कर दिया, फिर वो चेक करेगा, इंक्रीमेंट कर देगा आई इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू 2 3 4 करके 5 तक। फिर 5 के बाद 6 जैसे ही जाएगा तो वो रिटर्न 0 कर देगा, क्योंकि हमारी जो वो कंडीशन थी वो 5 तक ही प्रिंट करनी थी, मतलब 5 को इंक्लूड करके ही। तो दैट्स व्हाई दिस इज आउटपुट। सो ये बेसिक कोड से हम बेसिक मतलब कॉटलिन प्रोग्रामिंग थी। तो क्या क्या कवर अप कर लिया हमने, वेरिएबल्स कवर अप कर लिया, कलेक्शंस कर लिया, कंडीशंस कवर अप कर लिया, डेटा टाइप्स। ओके, classes or function we will cover up in our upcoming sessions. Okay, so I think 511 भी हो गया है। Now moving forward to our Android Studio part. Okay, I know you are a little bit boring कि हाँ कितना ज़्यादा कोडिंग हो गया, but don't worry, जो हमारा second phase है जो Android Studio part, it will be little bit quite interesting. So watch this session till the end. Okay, so let me jump to the presentation part. Just wait a minute. Yeah, let's see our chat section.
Okay, okay. Yeah. So, hmm. तो हमने Kotlin basic cover up कर लिया on the Kotlin playground. Now let's start the Android Studio. Okay. So what we are creating, what we are building in the Android Studio is birthday card app, which is a basic UI app. So यहाँ पे हम किस हिसाब से हम टेक्स्ट और इमेज को पुट करना है अपने ऐप में, तो वो हम यूज करेंगे इन बर्थडे कार्ड ऐप में. ओके. सो फॉर दिस क्या क्या चीज़ें रिक्वायरमेंट है, वी नीड एन एंड्रॉयड इम्यूलेटर. ओके. फॉर दिस वी यूज एंड्रॉयड इम्यूलेटर. सो आई विल टेल कि हाँ कैसे तुम एंड्रॉयड इम्यूलेटर क्रिएट कर सकते हो. ठीक है. तो एंड्रॉयड नेटर होता है बेसिक एक एंड्रॉयड फ़ोन ही होता है जो तुम इज़िली उस पे तुम अपना ऐप को रन कर सकते हो. एक डमी एंड्रॉयड फ़ोन व्हिच इज़ रन ऑन योर सिस्टम. ओके. सो दैट्स इट. सो यूज़र इंटरफेस की व्हाट आर द थिंग्स यू कैन सी ऑन द ऐप इज़ कंप्राइज्ड ऑफ यूज़र इंटरफेस. कि वहाँ पे यूज़र इंटरफेस में क्या-क्या आता है, एलिमेंट व्यूज़ भी होते हैं. व्यूज़ इन द सेंस कि बटन्स, इमेजेस, टेक्स्ट, they are all come under user interface part. Okay. So this is the layout. So in let me explain it about layouts. So yeah, just give me a second. Yeah. So in layout there are lots of views. Views in the sense कि buttons हो गया, images हो गए और text हो गया, वो सारे इस common layouts में show होते हैं. Okay. Yeah. Let's jump to our next slide. एक minute. Yeah. Yeah. So these are the views, images, buttons, text. Views कितने types के होते हैं? Views are of different types. It could be a text view, image view, buttons. Okay. But today in this session we will cover text view and image view part. Okay. So let's dive into our Android Studio part. Let me close this button. Yeah. Let me share the screen, full screen mode. Let's take a 1 minute break. We will come on 5:16. Okay. तब तक chat में देख लेते हैं क्या chats हैं. I guess there are only two members are there. Okay, no worry. And there are lots of announcement कि we are also jumping to the Discord channel. So if you haven't joined our Discord, then do join our Discord fast. I will share the links in the comment section. That तो जाके एक बार डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर लेना DSCPGDAV का. There are so many channels, voice channels, text channels where you can learn a lot of things every day. Okay. And you can also check our website where we are also running our Android Study Jam. Then you can directly go to the Android Study Jam page and start creating your apps using the Android Study Jam curriculum learning path which is provided by Google. So I think we should start now. It's 5:16. Yeah. So here's the Discord link, bit.ly dscpgdav Discord. There is also a Discord trailer which I will run later on. So till then, stay मतलब wait करो थोड़ा. Then I will upload this trailer. Okay. Yeah. Now I will share my full screen. Yeah. Just give me a second. Yeah. Yeah. So if you haven't installed the Android Studio, so don't worry, you can install it using the links which are given in the description in this description. So जाके पहले install करो Android Studio, फिर you can easily create your Android app. Okay. So let me start with our Android Studio. Okay. एक minute. Yeah. Just cut it. Wait. So I have already installed the Android Studio. I'm just running it. Yeah. And make sure कि
जितने भी रिक्वायरमेंट्स है कि हाँ योर प्रोसेसर शुड बी गुड इनफ टू हैंडल दिस एंड्रॉइड स्टूडियो, क्योंकि बहुत बड़ा सॉफ्टवेयर है, इट विल टेक लॉट टाइम टू अब इंस्टॉल और ओपन। सो मेक श्योर कि कॉन्फ़िगरेशंस तुम्हारे अच्छे होने चाहिए, या हार्डवेयर अच्छा होना चाहिए, रैम की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। सो इट विल टेक सम सेकंड टू रन इट। अगर तुम्हें टेक्स्ट की साइज स्मॉल है तो को बता देना कमेंट्स में, आई विल एनलार्ज इट। स्टार्टिंग से चलाता हूँ कि जैसे तुम ओपन करोगे एंड्रॉइड स्टूडियो तो फर्स्ट पेज क्या दिखता है। लेट मी यूज दिस फर्स्ट, या क्लोज प्रोजेक्ट। या सो जैसे ही तुमने अपना एंड्रॉइड इंस्टॉल कर लिया, मतलब एंड्रॉइड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया इन योर पीसी, देन जैसे तुम स्टार्ट करोगे तो ये फ्रंट पेज आता है, फर्स्ट स्क्रीन जो तुम्हें दिखती है, विजिबल होती है, ठीक है। तो यहाँ पे देयर सो मैनी थिंग्स, जो लेफ्ट साइड है वहाँ पे जो तुमने रिसेंट प्रोजेक्ट का रखा है वो शो होता है, एंड इन द राइट पार्ट देयर आर सो मेनी ऑप्शंस व्हिच वी विल कवर इन दिस सेशन। सो फर्स्ट इज कि स्टार्ट अ न्यू एंड्रॉइड स्टूडियो ऐप, जो कि अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना फर्स्ट ऐप। सेकंड इज स्टार्ट अ न्यू फ्लटर ऐप, एज आई हैव यूज्ड दिस प्लगइन फॉर द फ्लटर, बट तुम्हारे वाले जो स्क्रीन है तुम में नहीं दिख रहा होगा, तो इग्नोर कर देना ये वाले को। एंड थर्ड वन इज ओपन एन एग्जिस्टिंग एंड्रॉइड स्टूडियो प्रोजेक्ट। सो अगर तुमने जैसे कोई एंड्रॉइड स्टूडियो मतलब करेंटली वर्क कर रहे होंगे तो तुम यहाँ से ओपन कर सकते हो उसको। देन द फोर्थ ऑप्शन इज द गेट फ्रॉम वर्जन कंट्रोल। लाइक यहाँ पे तुम कोई भी अगर गिटहब पे कोई ऐप है, उसका कोड उसको तुम क्लोन कर सकते हो यहाँ पे यूआरएल डाल के। तो क्या होगा, डायरेक्टली वाला जो ऐप का कोड वोड होगा वो डायरेक्टली तुम्हारे एंड्रॉइड स्टूडियो पे आ जाएगा, और इजीली वाला ऐप रन हो जाएगा तुम्हारे स्टूडियो पे। दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग दिस कोड वाला। ओके, गेट फ्रॉम वर्जन कंट्रोल। बाकी चीज़ें इग्नोर कर देना, इट्स नॉट यूजफुल। ओके, नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कॉन्फ़िगर। जहाँ पे तुम कॉन्फ़िगर करोगे अपने एवीडी मैनेजर। एवीडी क्या होता है? एंड्रॉइड वर्चुअल मशीन, ठीक है। एवीडी एंड्रॉइड वर्चुअल डिवाइस जो कि तुम क्रिएट करोगे, मतलब इम्यूलेटर इन द फॉर्म तुम्हें क्रिएट करना है। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट यू हैव टू क्लिक एवीडी मैनेजर। ओके, लेट मी चेक द चैट। या okay, no one is commenting, okay, don't worry। या तो यहाँ पे क्या होता है, एंड्रॉयड वर्चुअल डिवाइस मैनेजर विच शोज। अभी मैंने कौन सा इंस्टॉल कर रखा हूँ इम्यूलेटर, यूजिंग पिक्सल 3 AP29। बट इफ यू वांट टू क्रिएट योर इम्यूलेटर देन यू हैव टू क्लिक क्रिएट वर्चुअल डिवाइस। सो you just have to click create virtual device, then you will go to the select hardware page। so यहाँ पे तुम्हें हार्डवेयर सेलेक्ट करना है कि कौन सा तुम्हें कौन सा फोन स्ट्रक्चर यूज करना है और उसका साइज क्या है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट हार्डवेयर दे रहे हैं कि यहाँ पिक्सल 3, 3XL3 है। ओके, और यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम, इफ यू आर क्रिएटिंग एन ऐप फॉर द tablet size, then you can select the tablet wala hardware. If you're using the TV, use this hardware. If you're using app for the watch or the wear round wala circle, then you can use wear OS। okay, but we have to stick to the phone part क्योंकि हम आज की करने वाले हैं फोन वाला हार्डवेयर पे। तो ये इधर तुम कोई भी पिक्सल यूज कर सकते हो। आई एम यूजिंग पिक्सल 3a एक्सल। देन यू हैव टू क्लिक नेक्स्ट। ओके, सो यहाँ पे जो पेज है वो क्या है, सिस्टम इमेज। सो सिस्टम इमेज क्या है कि हाँ तुमने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम अपने इमुलेटर में तुम यूज करोगे या इंस्टॉल करोगे। ओके, हियर आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल द क्यू ऑपरेटिंग सिस्टम। सो यहाँ पे डाउनलोड ऑप्शन नहीं आ रहा, बट इफ यू आर यूजिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम देन यहाँ पे एक डाउनलोड ऑप्शन आ रहा होगा, देन यू हैव टू डाउनलोड इट एंड इट विल टेक the operating system in your emulator। okay, so these are the things I have already installed, तो मेरे को इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। देन यू हैव टू क्लिक नेक्स्ट। देन हियर इज द जो तुम्हें एवी का नाम देना है, तो ये डिफॉल्ट नाम ही मैं देता हूँ, चेंज नहीं कर इसको। यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइज है कि यहाँ पोर्ट्रेट मोड या लैंडस्केप मोड। ओके, सो ये था इस चीज़ों को मतलब ज़्यादा चेंजेस नहीं करना, तो ऐसे ही डिफ़ॉल्ट रहने दो। देन जैसे तुम फिनिश क्लिक करोगे इम्यूलेटर विल स्टार्ट वर्किंग, मतलब शो हो जाएगा। इवन आई हैव ऑलरेडी क्रिएटेड माय इम्यूलेटर, तो मेरे को फिनिश करने की ज़रूरत नहीं है। आई विल कैंसल इट। या सो जैसे तुम फिनिश क्लिक करते हो इट विल शो दिस इम्यूलेटर। नाउ हाउ विल यू रन दिस इम्यूलेटर?
So to run it, you have to click the green button, launch this AVD in the emulator. Yeah. So it's starting the AVD. Just wait for some more seconds. It will start. Okay. So make sure कि तुम्हारा hardware configuration अच्छा हो, मतलब strong हो, तो you can easily run it within a seconds. So this is our emulator. So और ये वाला जो ऐप है वो हमें क्रिएट करना है, हैप्पी बर्थडे वाला ऐप, ठीक है। तो ये हमने emulator क्रिएट कर दिया। It's quite similar to our Android phone which you are using. So all the things are there, hardware, software, so सारी चीजें हैं, okay. Let's close this emulator and dive into our first project. Yeah. So to start your Android project, you have to click Start New Android Project. Yeah. So feel free to ask any doubt या कुछ भी queries है, um, you can post it in a live chat part. Okay. Either you can create this app simultaneously, मतलब साथ साथ भी create करना, then you can create it if you have installed the Android Studio. Okay. So this is the project template कि there are so many different types of templates. Template में क्या होता है कि प्री बिल्ड कोडिंग ऑलरेडी होती है उसमें, बेसिक कोडिंग, तो तुम्हें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। तो I will select the empty template, empty activity template, where you will see the hello world, yeah, hello world app. Okay, okay. So just click next. Yeah. नाउ तुम अपना जो ऐप तुम क्रिएट करो उसका नाम क्या देना चाहोगे? लाइक वी आर गोइंग टू क्रिएट आवर बर्थडे ऐप, देन आई विल राइट माय ऐप नेम एज हैप्पी बर्थडे ऐप। या पैकेज में नेम हेल्प यू टू आइडेंटिफाई योर ऐप इन योर ऐप स्टोर, और ये सारे पैकेज को, जितना भी तुम्हारा फाइल है पैकेज है, उसको बंडल करके रखता है। तो ये इस पे कैसे करते हैं कि तुम्हारा खुद का डोमेन नेम होना चाहिए, बट डोंट वरी, अभी अभी तुम्हारे पास कोई डोमेन वोमेन नहीं है, तो इसको अभी डिफॉल्ट ही रहने दो, कॉम एग्जाम्पल योर ऐप नेम। ओके। नाउ फाइल लोकेशन वेयर यू वांट टू सेव दिस प्रोजेक्ट, then language, as we are using Kotlin, so we will prefer to use Kotlin language. Either you can create this app on Java too, but we are using Kotlin, as Google use Kotlin for profit. Google मतलब Google ने choose किया Kotlin for for creating Android app, official language है Google की for creating Android apps. Okay. Now minimum SDK, मतलब कि तुम्हारा जो emulator है, जो तुम्हारा ऐप है, वो कितने वर्जन तक चल सकता है, मतलब मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए, मतलब कि कौन 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 से एंड्रॉयड ऐप तक वो सपोर्ट कर सकता है, तो वो हमें सेलेक्ट करना होता है यहाँ पे। तो अगर तुम्हें मिनिमम एचडीके का चेक करना है, तुम यहाँ पे चेक कर सकते हो कि हेल्प मी चूज। सो हियर आर द लॉट्स ऑफ एंड्रॉयड वर्जन्स वेयर यू कैन सेलेक्ट किया कौन सा तुम्हें मिनिमम रखना है। लाइक अभी मैंने मिनिमम रखा हूँ 5 पॉइंट और लॉलीपॉप 21। सो इन केस अगर मैंने इसको मिनिमम रखा है ऐप, और अगर तुमने कोई ऐप क्रिएट किया है और तुम्हारा फ्रेंड का जो एंड्रॉयड ऐप है, वो उसका जो वर्जन जो अभी यूज़ कर रहा है प्लेटफॉर्म, वो है किटकैट, तो जो तुम्हारा ऐप है वो उनके फ़ोन में नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि हमने मिनिमम क्राइटेरिया क्या सेट किया है कि लॉलीपॉप के ऊपर के जितने भी वर्जन है उस पे चलेगा। अब तुम सोचो कि क्यों ना मैं मिनिमम वर्जन को आइसक्रीम सैंडविच रख देता हूँ, सो दैट जितने भी मतलब वर्जन्स आए हैं तो उन सब में चलना चाहिए। बट आइसक्रीम सैंडविच मैं नहीं रखूँगा, क्योंकि उसमें उस वर्जन में ज़्यादा फीचर्स नहीं है। फॉर एग्जांपल इफ यू चेक द मार्शमैलो ऐप, देयर इज़ अ फिंगरप्रिंट ऑथेंटिकेशन कन्फर्म सपोर्ट। सो अगर मेरे को अपने ऐप में सिक्योरिटी चाहिए, फिंगरप्रिंट चाहिए, तो मेरे को मार्शमैलो वाला सेलेक्ट करना होगा मिनिमम, मिनिमम जो मेरे को मिनिमम ऐप सपोर्टिंग के लिए, तो कि इसके ऊपर जितने भी ऐप्स हैं वो चल जाएँ, और जो भी मेरे को फीचर यूज़ करना है तो मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो अभी फॉर द मिनिमम एचडीके ऐप आई विल सेलेक्ट 5.0 लॉलीपॉप 21 एपीए लेवल। ओके, देन क्लिक ओके। सो हमने कॉन्फ़िगर कर लिया मिनिमम एचडीके। नाउ क्लिक फिनिश। ओके, सो इट विल लोड and it will take some time to up to load the file. Yeah, let's check the chat section. Yeah, don't want to use emulator, can we use yeah, Shubham, if you don't use emulator then you can use the Android phone too.
जो अभी एंड्रॉइड वाला इम्यूलेटर था ये एक पार्ट है, यू कैन ऑल्सो यूज योर phone as an emulator. Okay, so to know more about how you can connect your phone to your app, so you have to check the pathway, second pathway where they have mentioned कि कैसे तुम connect कर सकते हो अपने phone को as an अपने app के through. Okay, I will provide the link, just give me a second. dscpgdav, yeah, एंड्रॉयड स्टडी जैम, या। सो ये था बेसिक्स। तो यहाँ पे तुम्हें बिगिन योर फर्स्ट ट्रैक करना है। यहाँ पे सारी डिटेल्स है कि हाउ यू कैन इंस्टॉल योर ऐप, हाउ टू रन योर ऐप, बेसिक्स ऑफ कॉटलिन। सो आई विल पोस्ट इट इन द कमेंट। ओके, तो यहाँ पे तुम रजिस्टर कर देना, देन यू कैन सी कि हाँ क्या क्या कैसे तुम्हें करना है या कैसे तुम इंस्टॉल कर सकते हो ऐप्स, और हाउ टू इंस्टॉल योर एंड्रॉइड स्टूडियो, और हाउ टू यूज योर फोन एज एन इम्यूलेटर। ओके, so yes, you can. Yeah. So now moving to the Android part, let me enlarge this size. I think text size बहुत छोटी है, तो हम enlarge कर सकते हैं इसको. Yeah. So जैसे तुम enter करोगे, there are two files. कि first is activity main XML, which is the design layout, क्या कैसा तुम्हारा ऐप दिखेगा. Second is main activity dot kit, जहाँ पे तुम्हें logics या जो भी coding करनी है in Kotlin language, you can write it in this part. But in this session, uh, we will stick to the UI part ki how to use the text view or image view. Okay, so इस session में coding का कुछ use नहीं है, so don't worry guys, coding नहीं करना तुम्हें इस session में. Okay, so जो लेफ्ट वाला पार्ट है एंड्रॉयड, ये है बेसिक कि यहाँ पे जो भी तुम्हारे फाइल्स हैं एंड्रॉयड ऐप से रिलेटेड, वो सारे यहाँ पे लिस्टेड होंगे. तो एक बार हम देख लेते हैं क्या क्या है यहाँ पे. सो जैसे तुम ऐप पे क्लिक करोगे, देर आर ऐप कंप्राइज ऑफ थ्री फोल्डर्स. फर्स्ट वन इज द मैनिफेस्ट, सेकंड वन इज जावा, थर्ड वन इज resources या rest. So in manifest, there is a folder name called android manifest.xml. सो यहाँ पे ये फाइल किस लिए यूज होता है कि मान लो तुम्हें कोई माइक्रोफोन इनेबल करना है अपने एंड्रॉयड ऐप में, और इधर यू वांट टू इनेबल योर कैमरा फीचर, सो यू हैव टू मेंशन ऑल दिस फीचर्स इन दिस फाइल. ओके, दैट्स व्हाई वी यूज मैनिफेस्ट ऐप. ठीक है, बट इट्स नॉट रिलेवेंट टू आवर टुडे सेशन, देन वी कैन इजीली क्लोज दिस ऐप. Then moving forward, we have our Java folder. So inside Java folder, there are three subfolders. Last two folders are not relevant. They are used for testing, ki how you can test your app, which will be covered in our upcoming sessions. Okay. So we will stick to our com example.birthday app. So inside this there is a main activity जो कि मैंने बताया, जहाँ पे तुम्हें कोड करना है regarding the Kotlin language, जो भी तुम्हें ऐप में फीचर्स या जो भी तुम्हें कोडिंग का पार्ट है वो यहाँ पे तुम्हें लिखना होगा. ओके, सो ये इसका भी कुछ रिलेवेंट नहीं है आज. सो ठीक है. Then we have a res folder. So inside that there are so many things: drawbell, layout folder, map, values. So in drawbell we upload images, tag images हो गया या videos हो गया, जो कि हम यूज करते हैं वो हम drawbell में अपलोड कर सकते हैं. ओके, लेआउट. सो मेन जो हमें आज डिस्कस करना है वो है एक्टिविटी मेन डॉट एक्सएमएल फाइल, जो कि है लेआउट में. सो दिस जो अभी जो स्क्रीन देख रहे हो, ये क्या है, लेआउट एडिटर, वेयर यू कैन एडिट योर ऐप. ओके, सो वी हैव टू वर्क ऑन दिस. नाउ जो मिड वाला स्क्रीन है, ये यहाँ पे तुम सोच रहे हो कि दो दो मतलब स्क्रीन क्यों यहाँ पे, कि एक वाइट स्क्रीन है एक ब्लू स्क्रीन है. जो वाइट जो लेआउट है ये है डिजाइनिंग लेआउट, कि जो भी यहाँ पे तुम चेंजेस करोगे ये इट विल डायरेक्टली लिंक टू द ऐप, जो कि तुमने एमुलेटर में जो भी चेंजेस करो डायरेक्टली वहाँ पे शो होगा. दैट्स व्हाई वी यूजिंग दिस वन. एंड जो ये ब्लू वाला, ये क्या है, ब्लूप्रिंट, कि तुमने क्या क्या एलिमेंट यूज किया, क्या क्या स्ट्रक्चर यूज किया है, मतलब स्केलेटन ऑफ दिस ऐप, क्या क्या तुमने फीचर यूज किया है उस पे. ठीक है, दैट्स व्हाई वी यूजिंग बोथ ओके, डिजाइन और ब्लूप्रिंट ऑफ दैट ऐप. ठीक है, डोंट वरी गाइस, देयर आर सो मेनी टन्स ऑफ टूल्स. सो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, जो जो इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ तुम वही फोकस करना, सो दैट यू कैन इजीली क्रिएट योर फर्स्ट एंड्रॉयड ऐप बाय टुडे. ओके, सो इफ यू हैव एनी डाउट कि ये नहीं समझ नहीं आ रहा या कुछ ओपन नहीं हो रहा, देन यू कैन फील फ्री टू आस्क इन द लाइव चैट सेक्शन. ओके, so this is the hello world app. Let's run this app by clicking this green button, run app, which is on the top right corner. And here you can see that pixel 3 API जो कि हमने enable कर रखा है अपना emulator. Just click the run app.
So you can see that हमने run कर दिया. It will start processing, starting AVD. Okay, just wait for some seconds. It will start within a moment. Okay, yeah, it's take time. Wait, ये मैंने लास्ट ऐप बनाया था तो वो अभी तक वही उसका इमेज पिक कर रहा है, बट ये भी लोड होगा थोड़ी देर में. वेट, तब तक एक बार मैं कमेंट्स देख लेता हूँ. इज देयर एनी कमेंट्स? ओके, ओके. I think very less members are there in the live section. I don't know why they are not joining this interesting session. Yeah, let's check our emulator. Just wait for a few more seconds. Yeah. Now you can see our birthday app, Hello World app. So this is the first app which you have created, Hello World app. So जो कि हमने यहाँ पे लिखा है Hello World, it will directly direct to the emulator. So this is it. So congrats, you have created your simple app, Hello World app. Okay. So let's close this and moving forward to the our next जो हमें बनाना है happy birthday card. Okay. Let's close this. Yeah. So अब हम बात करते हैं यहाँ पे पैलेट्स की. जो मिड वाला जो पार्ट है, पैलेट्स हो गया, कंपोनेंट ट्रीज हो गया और एट्रीब्यूट्स. सो लेट्स डिस्कस अबाउट द पैलेट्स. सो पैलेट्स कंप्राइज ऑफ लॉट्स ऑफ व्यूज. सो व्यूज क्या है? एलिमेंट्स है जो कि तुम देखोगे स्क्रीन में. लाइक अभी करेंटली हेलो वर्ल्ड क्या है? एक टेक्स्ट व्यू है which is a part of a palette. Similarly, there are buttons, images. For that, they have different views, which comes under the palette part. Okay. सो यहाँ पे अभी हम कौन सा यूज करें? टेक्स्ट व्यू. तो दैट्स व्हाई वी आर सीइंग हेलो वर्ल्ड. एंड यू कैन सी अ कंपोनेंट ट्री. लेट मी जूम इट आवर ऐप. वेट, या. So here you can see the component tree. So in the component tree you can see the latest views जो तुम यूज करोगे अपने करंट ऐप में. जैसे कि देयर इज अ वन टेक्स्ट व्यू जो कि हेलो वर्ल्ड है, तो वो भी वही यूज हो रहा है, बाकी कोई यूज नहीं हो रहा. तो जो जो तुम व्यूज यूज करोगे वो दे आर लिस्टेड इन दिस ऐप. ओके. सो बेसिकली ये यू आई है जो कि तुम स्क्रीन पर देख रहे हो. तो यू आई कंप्राइज ऑफ एलिमेंट्स जो कि होते हैं हमारे टेक्स्ट व्यूज, इमेज व्यूज, buttons and many more things. Okay. It's 5:35. Let's try to wrap up this session by 6. So we will try to complete our happy birthday app within a half hour. So till then, stay tuned during stick to our session. Okay. So let's change the happy birthday app. तो पहले क्या करना होगा? You have to let's change the hello world text. तो just click this. या मैंने click कर दिया. अब तुमने राइट साइड देखोगे देयर इज अ एट्रीब्यूट पार्ट. सो इन एट्रीब्यूट यू कैन चेंज द टेक्स्ट, कलर, फॉन्ट, size, many more things. Okay. So let's change the hello world to happy birthday. तो how you can change it? You just have to go to the common attribute. तो यहाँ पे text option होता है, just replace it with happy birthday, PIRTH, happy birthday, and enter. Yeah, so it will update on the screen. So you can see that I have updated the happy birthday. Okay. So ये थे. Let's create our first tab. पहले हम इसको delete कर देते हैं. तो just click this and hit delete button. Yeah, so it will delete everything and यहाँ से component tree से text view भी remove हो गया. Okay. Now just drag the text view to our screen. या तो मैंने ड्रैग किया टेक्स्ट व्यू और ये आ गया स्क्रीन पे. ओके. सो अभी आप देख रहे हो कि यहाँ पे टेक्स्ट व्यू है. अब अगर मैं इसको रन करूंगा, मतलब इम्यूलेटर पे रन करूंगा, तो जो टेक्स्ट व्यू है वो टॉप कॉर्नर में चले जाएगा. मतलब इट विल नॉट शो कि हाँ कितना मार्जिन है फ्रॉम द स्क्रीन, टॉप स्क्रीन और द लेफ्ट और टॉप स्क्रीन. लेट मी रन इट ताकि तुम्हें थोड़ा आइडिया हो जाए. ओके. जस्ट वेट फॉर सम सेकंड. विल टेक, या लोड होने में थोड़ा टाइम लगा रहा है. वेट. या सो यहाँ पे देखोगे कि टेक्स्ट व्यू है जो बिल्कुल टॉप लेफ्ट कॉर्नर में चल रहा है क्योंकि हमने कोई मार्जिन ही सेट नहीं किया. ठीक है. सो फॉर दिस वी यूज एट्रीब्यूट. जाएंगे एट्रीब्यूट में एक ऑप्शन है कांस्टेंट विजेट्स. वहां पे यू कैन
मेंशन कि तुम्हें कितना मार्जिन रखना है स्क्रीन से। ओके, तो यहाँ पे देख लोगे कि एक स्क्वायर टाइप का है, तो जस्ट क्लिक द लेफ्ट कांस्टेंट and put it 16, and right top constant and put it 16 and hit enter. Now you said that कि 16 margin distance में रहेगा screen से left side और top side. Now we will rerun it again to check our emulator कि यहाँ कुछ update हुआ है कि नहीं. Let's rerun it. Wait. या so यहाँ पे देख लो थोड़ा मार्जिन चेंज हुआ है कि हाँ 16 के मार्जिन से है, ठीक है। तो और जो 16 डीपी है, ठीक है, तो डीपी एसपी ये सारे स्क्रीन के मार्जिन से, जैसे कि हम यूज करते हैं पिक्सेल्स हो गया या इंचेस हो गया, सेंटीमीटर्स हो गया, फॉर दैट वी आर सिमिलरली वी आर यूजिंग डीपीएसपी इन आवर एंड्रॉइड, क्रिएटिंग आवर एंड्रॉइड ऐप। ओके, जस्ट स्टार्ट क्रिएट दिस। एक बार मैं अपडेट कर दूँ यहाँ पे, और यहाँ पे लिख देता हूँ टेक्स्ट पे जाके हैप्पी HAPPYBIRTH हैप्पी बर्थडे नेहा। ओके, या एंटर। सो आई राइट दिस। नाउ मेरे को अब उसका साइज इनलार्ज करना है, तो कॉमन एट्रीब्यूट में ऑप्शन है टेक्स्ट साइज का, देन यू कैन इनलार्ज इट। अभी ये है 14 एसपी, ठीक है। एसपी डायमेंशन मतलब मेजरमेंट के लिए, टेक्स्ट साइज के मेजरमेंट के लिए आई विल पुट इट 26 एसपी। या so you can see that XP enlarge हो गया। Yeah. Now I would like to change the color of the text. So I will use dark black. Yeah. And yeah. So here I have changed the color. Yeah. Now it's looking clear and perfect. Okay. So ये हमने एक text view जोड़ दिया. Now we will use another text view for signature. तो मैं इसको लेफ्ट बॉटम में पुट करता हूँ। या सिंपली इसके मार्जिन जो होंगे वो भी मैं 16 डीपी रख देता हूँ, 16 यहाँ पे भी 16। ओके, and similarly I will update the text to from summer। ओके, परफेक्ट। एंड टेक्स्ट साइज भी मैं कर देता हूँ 26 एसपी। या एंड font color I will keep it dark black। yeah, perfect। so this is our basic text view की जो कि बर्थडे कार्ड में है। तो दिस शोज कि हाँ तुम्हारा 50% कंप्लीट हो गई बर्थडे कार्ड ऐप। नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट की image, how to enable the image। let me check our comment की कुछ comments आएगी नहीं। okay, no comments are there। oh भाई, so now we will drag the image view part। so हमें image भी चाहिए। for this I will drag the image view into our layout, app layout। yeah, but before that हमें कौन सा image चाहिए उसके लिए हम image को भी डाउनलोड करना पड़ेगा। so for this I will put this link to download the image, birthday card image। तो एक बार लिंक शेयर कर देता हूँ। wait, yeah I have, yeah, see। तो यहाँ से तुम इंस्टॉल कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो बर्थडे कार्ड ऐप। सो एक बार चेक कर लेना ये वाले लिंक्स को। ओके, सो आई हैव ऑलरेडी इंस्टॉल्ड दैट बर्थडे कार्ड ऐप। लेट्स आई विल इंस्टॉल इट in the birthday card app in the download। yeah, so this is the birthday card app, how it's look। let me open this। yeah, it's time। so this is the background which we use in our birthday card। just copy कर लो इसको, copy। now कहाँ तुम इसको पुट करना है, यू कैन पुट इन अ ड्रॉबेल, क्योंकि ड्रॉबेल में जैसे भी वीडियोस इमेजेस तुम वहाँ पे डाल सकते हो। तो राइट क्लिक टू द ड्रॉबेल एंड पेस्ट इट। तो पेस्ट कहाँ करना है, ड्रॉबेल 4024। या एंड नेम दे दो इसको
birthday, PHDAY birthday, and click OK. ठीक है, तो ये हमने इमेजेस को डाल दिया ड्रॉबेल के अंदर. नाउ ड्रैग द इमेज व्यू. या give them. So here a birthday wala card. You can see this birthday and click it and okay. So अभी हमने इसका constant कुछ रखा है, तो ये लेफ्ट बॉटम में जा रहा है, बट वी हैव टू फर्स्ट सेट द कांस्टेंट. तो प्लीज द आंसर इन द कमेंट कि इसका कांस्टेंट्स क्या होगा, वैल्यू क्या होंगी इसकी, सो दैट ये सेंटर पे रहे फ्रॉम टॉप राइट बॉटम लेफ्ट. So please write this in our live comment section कि इसका वैल्यू क्या होना चाहिए कांस्टेंट्स का, so that हर पार्ट से टॉप लेफ्ट बॉटम राइट से इक्वली वो फिक्स रहे. Let's check our session. I guess very few students are there. Okay, no worry. So मैं ही बता देता हूँ आंसर. तो यहाँ पे हम जो कांस्टेंट भेज रहे हैं इसका जो वैल्यू रहेगा 0 बाय डिफॉल्ट, यहाँ पे भी 0 एंड 0. या नाउ ये टॉप बॉटम लेफ्ट राइट से फिक्स हो गया है उसी जगह पे. ओके, सो दिस इज द वर्क फॉर कांस्टेंट. तो वैल्यू क्या होगी, 0 होगी हर जगह से. ओके, नाउ यू माइट बी थिंक कि जो पीपीटी में जो इमेज बर्थडे कार्ड का, तो एक मिनट विल शो दिस. वो तो पूरा कवर अप कर दिया था हमारे ऐप को, तो यहाँ पे क्या, तो don't worry, you can also enlarge the birthday app or fix it to the whole screen. Just go to the scale type comes in under the common attributes. So यहाँ पे scale type पे click कर दो and go to the center crop. So जैसे तुम click करोगे center crop पे, it will cover whole your layout. Okay. Now you might be confused where are my text views. कि मैंने तो text view लिखा happy birthday or from someone's signature, but you are not finding this. Don't worry, you can use it. So यहाँ पे तुम्हें क्या करना है, in the component tree just drag the image view to the top of the text views. Okay, so here you can see that मैंने जो image views उसको top पे रख दिया, बाकी text views वो नीचे रख दिया. So this is how a birthday app card app is created. So well, congratulations, you have created your first birthday app. Let's check this in our emulator. So let's run our emulator. Just click into this icon and check our emulator. Okay, just wait whether we created our app or not. Yeah, so this is our app. So we have created our first basic UI, matlab basic layout Android app, which is our birthday card app. So this is all about birthday app, how you can create it. बहुत ही easy था, हमें कोड करने की जरूरत नहीं पड़ी. We can easily use it using drag and drop method. अब बट यू माइट बी थिंकिंग ये तो हमने सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप से कर लिया, बट इसके पीछे भी कोड है. तो यू कैन चेक कि हमने जो जो चेंजेस किया, जो जो डाउनलोड टेक्स्ट व्यूज साइज बड़ा छोटा किया, कलर चेंजेस किया, you can also do this using the code. So let's check the code की कोड क्या है इसके पीछे का. So this is the code जो तुमने अभी बनाया है, जो हमने अभी बनाया है वो इस कोड की हेल्प से बनाया है. सो इधर यू कैन यूज द डिजाइन लेआउट, यहाँ डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, और यू कैन यूज activity main.xml file to update your app. So to create a complicate app या बहुत सारे features add करना है, so for that you need to update this file. मतलब you have code to make the app, make the fully app. अभी तो जो हमने ऐप क्रिएट किया वो तो बहुत इजी है, तो हम डायरेक्टली डिजाइन के हेल्प से यूज कर लिया, मतलब क्रिएट कर लिया डायरेक्टली, दो व्यूज किया और दो व्यूज का हमने यूज किया और क्रिएट कर दिया. बट for more functionality or for more designs you have to code it. Okay, so here you can see that मैंने को from summer size wrap content text views, तो यहाँ पे सारे mentioned है. Okay, so this is all about our app. So if you have any queries कि हाँ ये समझ नहीं आया या ये issue है, तो then you can ask me in our live chat, or you can ask us on our Discord server. So there is a channel called mobile domain, where you can freely post your queries regarding anything about Android, how to create an Android. So that's why.
now so if you haven't installed it or create this app, so don't worry, you can install it. Matlab you after installing the app, you can watch this video and you can easily able to create this happy birthday app. Okay. So this is all about our today's session. Yeah. So that's it. Let jump to our presentation part. Okay. Let me go to our presentation part. Yeah. So we have created our birthday card app. Okay. Yeah. We have learn about different types of views, क्या क्या views होते हैं, and how to use it in our app. Then these are the views. So we have covered the three pathways. The fourth pathway we will cover on 8th of Jan. So make sure to join our session on 8th at 5 p.m. onward. Okay. Yeah. And you can also earn batches while going to our website and go to our Android Study Jam part. So here you can log in and start completing the code labs and earn batches. Okay. So what we have learned today. So let me share my screen. Let me stop my screen. Wait. Yeah. Yeah. Just give me a second. Yeah. So today we have learned key basics of Kotlin programming. एक minute. Yeah. Hmm. So today we have learned की basics of Kotlin programming क्या क्या होते हैं basics, variables, conditions, collections, and many more things. And then we talk about कि how to install your Android app and how to create your emulator. And then we are creating our first basic app, Hello World app. Then we are creating our final app जो कि था Happy Birthday app. So this is all about our today's session. I hope you enjoy this and make sure to follow our social medias and YouTube. Okay. So ये फोर्थ पाथवे विल कवर टुमारो. ओके. सो अब है कि कल हम क्या बनाने वाले हैं. तो टुमारो वी विल क्रिएट अ डाइस रोलर ऐप. वी विल इनेबल द रोल बटन कि जैसे तुम क्लिक करोगे रोल बटन को, द डाइस विल ऑटोमेटिकली रोटेट कि हाँ रैंडमली रोटेट कि हाँ क्या क्या इनपुट आएगा. मान लो कि मैंने रोल किया, इट विल शो 1 2 3 4. सो कल वो हम डिस्कस कर लेंगे. ओके. सो दैट्स इट. I think we have not missed anything. Yeah. Most important thing is whatever you have learned, try to share it with different social medias and tag hashtag Android Study Jam and also tag hashtag dscpgdav on different social medias कि हाँ तुमने ये create किया या ये बनाया है. तो so that we will also post it in our social media कि हाँ students are also trying to create Android app. Even though I'm also creating the app for the first time because I'm also a web developer, but Androids are because we are using Androids in our daily life. तो आई थिंक कि हाँ हमें भी पता होना चाहिए कि हाँ कि कैसे हम एक एंड्रॉयड ऐप क्रिएट कर सकते हैं. सो एंड सो मोबाइल डेवलप डोमेन इज ऑल्सो एन अमेजिंग फील्ड टू एक्सप्लोर. सो ये नहीं कह रहा कि यू हैव टू स्टिक टू अ पर्टिकुलर डोमेन. क्या यू आर अ वेब डेवलपर देन स्टिक टू वेब और डिजाइन. ट्राई टू enlarge your horizon. जितना तुम सीख सकते हो तुम सीखो. ओके. So hope you enjoy this session and share this with different social media platforms and hashtag use kar lena. Okay. So that's it. Now there is a trailer which we are launching today for our Android server. So just give me a second to run this trailer. It's already 1 hour 22 minutes. Don't worry. Yeah. So let me share some informations. You can check our social media handles at the rate dscpgdav where we are posting some amazing piece of content on a regular basis. So make sure to follow this. Okay.
and tag wherever you can. Okay, and this is our yeah, wait, this is our Discord server link. Let me share this. I think it's already shared now. Yeah, just a minute. Yeah, and I think there is no more. Yeah, so this is our Discord server link. And to know more about Android Study Jam, just go to bit.ly Android Study Jam. Wait, yeah. So this is the link कि bit.ly Discord, ये तो Discord server का है. एक minute, where is that link, man? Okay, so I will share this in the comment. Okay, so don't worry. Now the trailer part which we are launching today. So ये हमारा Discord का trailer है. Then you can check this out. So yeah. Hello everyone, I am from dscpgdav and today I have an exciting news for you all. That is, we are finally moving to Discord. So you all must be wondering why we are doing that. Because we are going to extend the boundaries and interaction level with you guys. Discord has 23 text channels and 6 voice channels from different domains like web development, Android, games, memes, internships, and many more. Hey guys, each challenge is independent of its use. 2 conference room, entrepreneurship, English speaking, and you know the best part, music by DJ Ghansham 24/7. So, what are you waiting for? Join the DSA Discord server now. So thank you so much for joining this session. Signing off, Samarjit Mai, and make sure to like this video, subscribe this channel, comments in the comment section. Okay. So bye everyone. We will see you in our upcoming sessions. So yeah, signing off. Bye. Let's. Yeah.